anyone in this group is learning Android development right now, or all are beginner in this track? By reviewing your answer, I came to a conclusion that everyone is beginner in Android development. I'm also a beginner because I will not rated myself as a professional in Android because I'm also learning side by side. And do you know on which platform we can build Android? Because there basically किसी को पता है Android होता क्या है, मतलब क्या है ये, what is Android? Yep, right, Pooja. Basically, it's an operating system. Okay, like you're using Windows, iOS, so they are all operating systems. So similarly, Android is also an operating system. And और ये हम कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली वी आर यूजिंग इट इन फोन, टैबलेट्स, वॉचेस. सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में वी कैन यूज. वी आर ऑल्सो यूजिंग इन कार. देखा हो जो भी टेस्ला कार से, दे आर ऑल इनेबल्ड एंड्रॉयड ऐप in the car. So there are lots of devices which are using Android on a day-to-day basis. So basically, Android is an operating system, or it's a Linux-based mobile operation system that primarily run on smartphones and tablets. Okay, so it is a small definition कि Android होता क्या है. अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हो कि Android is an operating system. Can anyone guess how many Android devices are in the world? कोई भी एक 3 billion. You are close to that mark, exact mark. Also, I've shared that slide for a few seconds, so you can check. You can also go through this number which I showed in a previous slide. I'm a web developer working on React.js, and Android is currently I'm starting learning Android. Okay, and earlier I am also Microsoft Learn Student Ambassador, which is a similar program as Developer Student Club. Okay. Also, side by side, I'm running a podcast channel, which is the Summer Show, which is available on Spotify, YouTube. So you can check out the success stories of students which recently pass out from their college and they are earning about 20 to 30 LPA, and they are all from the tier 3 colleges like us. Delhi University comes also on the tier 3. मतलब अगर CS department देखें, so tier 3 means कि companies not come to our college. We have to apply through off campus, then the student are selected. So I generally invite those student and know their success stories कि कैसे उन्होंने ये clear out किया interviews, कैसे उन्होंने job पाया. And there are lots. Recently I'm also starting a career oriented roadmap. So I have uploaded almost 20 to 30 podcast channel with different students. Recently I have uploaded a software engineer roadmap, like how you can start your journey as a software engineer अगर तुम non-tech student भी हो तो, and get a job in Google. So बहुत सारे episodes है career oriented roadmap, so you can check out on YouTube. Just type the Summer Show. This is a small promotion of me so that I get some subscribe from my YouTube channel. So yeah, and right now I am Android facilitator for DSCPQdav for this year. Okay, and one more thing, I have passed out the PGDAV college this year in 2022, and I'm pursuing MCA from Manipal University. So basically I'm sitting in my hostel area, the hostel room. And so yeah, it's a small description about myself, and I'm a foodie guy. I love to eat lots of things. So yeah. So basically, let me share the tutor challenge. So basically you have to, so tutor challenge इसमें क्या है कि you have to screenshot the best part of this session कि तुमने क्या सीखा. So you have to take a small screenshot and share it on a Twitter handle जहाँ पे तुम्हें add करना है DSCPGDAV and Google @GoogleDevSIN. Also, you have to add hashtag like Compose Camp India, Google Developer Student Club. And finally, after completing this Android study jam, we will announce top 3 winners for the Twitter challenge, and they can earn stickers or Google t-shirt from Google only, yeah, from our core team. So best part about this club is you can earn stickers or Google t-shirt. They are not virtual, मतलब they give you in your address. So ऐसा होता है. Last time जो भी मतलब मेरे टीम में थे, they also get the same perks as I get. और जो भी community में जो member थे, those who are active throughout the year, they also get some swag kit.
So to watch these videos, you have to go through our Insta handle dscpqdav. Okay, all these things are listed on our Insta page. So this is the tutor challenge, which is live from today only, and it will end at next month around 10th of October. Okay, जब तक ये एंड्रॉयड कैम्प चल रहा है. So this is the announcement. Anyone can participate, core member as well as community members. All students can participate in this Twitter challenge, but you have to add all these tags as well as hashtags. ठीक है, तो ये था. तो एक बार बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे तो सबको पता चल गया कि हाँ व्हाट इज एंड्रॉयड, व्हाई वी आर यूजिंग एंड्रॉयड. हाँ, वन क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड कर दिया कि हाउ मेनी एंड्रॉयड डिवाइसेस आर देयर करंटली. बेसिकली देयर आर अराउंड 2.5 बिलियन एंड्रॉयड डिवाइसेस. तो तुम देख सकते हो कि इतने डिवाइसेस विच आर यूजिंग एंड्रॉयड एप्स. सो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ दोज हु आर एंड्रॉयड डेवलपर्स जो डेवलप कर रहे हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस. And those apps which have 1,000 or 10,000 plus installations, they can earn how much? Because in Android in Play Store, if you publish your app and your app get some installation, like if your app get 1,000 plus installation, then you get a cash reward or earn money from Google only. जैसे कि YouTube होता है, like you after certain subscription you will get Google AdSense, मतलब you earn money. Similarly, after developing app and publish it on Play Store, you will earn lots of monies. So it's a side. Also people make a startup or side project, मतलब एक बनाई देते हैं कोर अगर जो एंड्रॉयड डेवलपर्स है. और एंड्रॉयड डेवलपर्स की अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, बिकॉज एवरीवन यूजिंग एंड्रॉयड ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो डिमांड भी ज़्यादा है, डेवलपर्स कम है. तो डेवलपर्स कम, डिमांड ज़्यादा, तो अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होगी डेवलपर्स की. So in future, I guess one of you will also be an Android developer. So make sure to complete this track and start developing Android, ठीक है, and earn money. Yep. So ये था basic about कितने Android developers हैं in the market right now. And if you have any questions, you can write it in the comment or you can unmute and ask question at any point of the session. So yeah, let me go through the these are the three main questions ki why we are here. First one is ask yourself ki why are you here? तुम आज क्यों ये session join कर रहे हो? Because no one is join for a कि हाँ कर लेते join free of cost है, क्या मतलब हमें क्या फायदा होगा. तो basically you have to ask these three questions to yourself कि why you are here, what are your goals, how do you plan to achieve them मतलब through Android. You have to ask and take 3 to 4 minutes to answer these questions. So these are the more important part. कभी भी कुछ भी start करो, then ask these three questions to yourself. So yeah, introduction is done, tutor challenge is done. Now what are the requirements for attending the session throughout this month? So there are 4 simple major requirements. First one is you must have a laptop or a desktop because तुम Android app mobile में तो develop नहीं कर सकते. तो you need a laptop or a desktop, which is a must to develop an app. Second one is you must have an internet connection with good speed. Good मतलब normal speed चलेगा to download the Android Studio or to work with code lab which are provided by Google. Third one is you have to complete all the provided units. So I will discuss these 4 units in upcoming slides. So stay tuned for कि क्या है उस units में और क्या क्या हमें complete करना है. And fourth and the last is basic math skills जो कि हम daily मतलब use करते हैं और जो हम पढ़ के आ रहे हैं मतलब from 1 to 10th. तो basic maths चाहिए हमें, nothing coding, nothing else. जो भी coding होगा वो will discuss in the further slides कि क्या कितना level की हमें coding आनी चाहिए. But this is a beginner track, so anyone who don't have any idea about Android or coding, ABC of coding, he or she can also join this camp and start building Android app with this Android app within 1 month. So yeah, requirement is done. Now we move toward schedule for today कि आज का हमारा agenda क्या है कि what we are going today. First one is we have a basic intro and we are beyond our limit मतलब हमने extend कर दिया इसको. Second one is we will talk about information about Compose Camp कि है क्या Compose Camp, इसमें हम क्या करने वाले हैं 1 month के अंदर. So I will explain everything. Then we will
go through a little bit about intro to Kotlin. Kotlin है क्या? Basically ये एक programming language है, similar to C++, Java, Python. So basically, it's also a Kotlin is also a programming language. So we will go through and touch some concept about Kotlin in upcoming slides. Fourth one is we will go through the unit one कि unit one हमें within 1 week के अंदर complete करना है. तो unit one का मैं overview दे दूंगा आपको. And finally, if you have any doubt, you can ask in last 10 minutes or 20 minutes. But Q&A is open from, मतलब वो open ही है, मतलब अगर कुछ भी doubt है तो you can use message part, chat section or unmute. But right now I'm not able to check the messages part, so because I'm focused on the PPT. So if you have any doubt, you can ask, and our core member will try to answer your queries at that moment. Okay, so schedule for today is this. After that, let's discuss कि हाँ compose camp है क्या. So basically, compose community organized event focus around how to build Android app using Jetpack Compose. So एक community program है which run for 1 month where we are going to build Android app using Jetpack Compose. Okay, I will go through Jetpack Compose in upcoming slides, and where attendants get hands-on coding experience with Compose. Okay, so where you will get a learning path and you can complete that learning path and build projects. So it's completely a 1 month program which started from 15th of September till 8th of October. Okay, so during this time you have to complete 4 units where you will build 3 to 4 Android apps, beginner Android apps. And for advance, अगर तुम चाहते हो कि I have to go into this roadmap, मेरे को Android developer बनना है, then you have to check out the advanced concept, which we will not focus in today's session because first you have to clear the basics. Okay, so this is the what is compose camp पता चल गया. Then finally, why we use Jetpack Compose. So क्यों use करें? There are 4 major points. First one is less code. Earlier we use, अगर जो भी Android के बारे में किसी को knowledge है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर earlier थोड़ा बहुत भी knowledge है तो earlier we use .xml for writing our UI. Basically UI क्या होता है जो तुम अभी स्क्रीन में देख रहे हो, like एक बॉक्स, एक हेडिंग. फॉर एग्जांपल लेस कोड की हेडिंग क्या है, मतलब कलर क्या है, ब्लू. इसका टाइटल कौन से टाइप, मतलब उस पर लिखा हुआ है, मतलब टाइप फेस क्या है इसका, कुछ है डिफरेंट. बाकी इटैलिक है या बोल्ड है, बाकी ये स्क्रीन साइज कितना है. तो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विच कम्स अंडर यूआई पार्ट, यूजर इंटरफेस. जो यूजर यूज करता है, क्लिक करता है, बटन को क्लिक करना, दे आर ऑल यूआई पार्ट. ठीक है. तो earlier we are using XML. Okay, XML नहीं पता तो कोई बात नहीं. तो earlier we use XML where we have to write a long code for a short function. Okay, हमें एक switch बनाने के लिए भी we have to write lots of code. But by using Jetpack Compose with less amount of code, you can easily create buttons or screen or color. You can use everything by using by writing 3 to 4 line of code. So first one is the less code. Second one is intuitive. You just have to describe your UI, मतलब user interface like buttons या screen size, color, and Compose will take everything rest. ठीक है. तो तुम्हें internally कुछ जानने की जरूरत नहीं. You just have to describe it and Compose will take charge of UI. You have to build that. Second one is accelerate development. It is compatible with all your existing code. For example, we are using Kotlin, but earlier somebody was using Java. Java is also a language we are using for Android development. So अगर तुम दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो इट इज कंपेटेबल विद Jetpack Compose. So you can build the Android app using Compose as well as Java too. So compatibility भी देता है, and also it's a powerful. So create beautiful app with direct access to the Android platform, APIs और ये वगैरह वगैरह. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, कि जस्ट इंट्रो किया Jetpack Compose है क्या. Okay, let's move on to the next slide. So let's discuss about the program overview कि हम क्या करने वाले हैं in this month. So there are basically 2 tracks. First one is the beginner. Second one is the intermediate. Okay, for the beginner, it's for a developer who is new in this field and who wants to learn कि Android बनता कैसे, Android app कैसे बना सकते हैं हम. So for that you have to select the beginner track. Okay, I will share the link of all the track by later part of this session.
so you need not to search externally. Okay, so there are the two track. First one is the beginner, so who are new to Android app development, they can select the beginner track. Okay, or may not have a prior programming experience, so उनके लिए beginner track है. Second one is a intermediate track. इंटरमीडिएट उनके लिए जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज है एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, जिन्होंने थोड़ा बेसिक्स ऐप बना रखा है. ओके, those are experience or familiar with Kotlin languages, they can prefer intermediate part. But throughout this camp, our main focus is for the beginner track. So we have to focus on beginner, how to build an app from start. Okay. Now in the two track, for example, if you click the beginner track, then beginner track comprise of pathways. So there are generally in the beginner track there are 4 units, और every unit के अंदर कुछ pathways हैं. Okay, so each track offer learning content with from Google that is structured into pathways. तो Google ने एक pathway बना रखा है, like A से B जाना है, B से C जाना है, C D करके, तो उन्होंने path बना रखा है basics to end तक, A to Z. So you have to follow each path one by one. Okay, so basically a pathway consists of sequence of learning activities which comprises of videos, articles, code lab. कोड लैब क्या होते हैं? कोड लैब आर दोज प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव टू राइट at that point. मतलब they will give a learning path, you have to just read and follow the instructions and use it in your Android studio. Okay, which help you to learn about certain technical topics. And finally at the end there is a quiz, and after completing that quiz you will able to earn badges. Okay, let me check the comment. अभी किसी को कुछ doubt है तो they can ask in the comment sections. I guess there is no doubt till now. And yep. So pathway is done. Then after that you will earn digital badges. Okay, and basically these badges are very important. Okay, I will discuss how to build your developer profile, because just for example अगर तुम्हारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है एंड सम इंटरव्यू कम टू योर कैंपस, तुम दिखा सकते हो सर आई हैव social presence on Google where there is a profile, developer profile, where I have earned all these badges. So interview देख के वो एकदम हैरान हो जाए कि हाँ कि ये एक बंदा कोई यूनिक है और इसने कुछ किया है अपने कॉलेज डेज में. ओके, सो इट्स प्लस पॉइंट एंड ऑल्सो एडेड टू योर रिज्यूमे कि हाँ यू हैव लर्न एंड्रॉइड एंड अर्न बैचेस. ओके, अभी कुछ फायदा नहीं है, जब इंटरव्यूज होगा तब तुम्हें पता चलेगा. So try to earn badges. For earning badges, you have to just answer the quizzes. Quizzes is like an assignment. Okay. अगर for example quizzes में तुम्हारे अच्छे marks नहीं आते, then you have to retake that quiz and then you have to answer the questions and earn badges. So yeah, badges are added to your Google profile. जो तुम track complete करोगे, badges automatically added होते जाएंगे. So let me go through the Google developer profile कि हाँ how to create a developer profile. Then only you can start learning Android development. So you can click this Google developer.google.com profile dashboard, and also let me show my dashboard कि मेरा profile कैसा है. Yeah, my profile. So basically you have to go to the Google developer website and there is a profile developer profile section. But उससे पहले तुम्हें sign in करना पड़ेगा. Sign in is very important. So after signing in, then you have to write the basic detail कि आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो. And you have to create a public page. So this is basically my public page which you can share with interviewer or when जब भी तुम company के लिए apply करो, you can just add this link in your resume. मान लो कि ये मेरा Google का profile है, तो you can check कि how many badges I have earned throughout this year. So these are all the badges which I have earned. Okay. Also similarly you can also earn. So till now I have earned 14 badges. So this is my developer profile. So for making your developer profile, you just have to go to this link and write your basic name and start earning badges. And yeah, for this, let me share the link side by side. Yeah. अभी किसी को डाउट है कि क्या है डेवलपर प्रोफाइल, देन ही और शी कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. राइट. Yep. So this is a developer profile. So your first step is to build a developer profile. Then only we all can track how many batches you have earned, and after completing this batches, whether you have built an app or not.
दिस इज द क्राइटेरिया कि हाँ टू मतलब जानने के लिए कि वेदर यू आर participating in our camp or not. So you have to build and develop a profile. So let me go to the slide part. Wait, your entire screen stop. Tab come shared. Yep. So batches are added to your code. So finally we have created our developer profile. Okay. So now let's discuss the beginner track. कि beginner track है क्या? Okay. So basically for the beginner track you need 3 to 4 prerequisites. First one is a basic computer literacy. Second one is a basic math skills. And second part is why you learn. What you will learn in this beginner track. पहला जो यूनिट है दिस इज फॉर कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक. तो बेसिक से तुम स्टार्ट करोगे लर्न करना एक न्यू लैंग्वेज. जो सी प्लस प्लस भी जिन्होंने सीखा है या कोई अदर लैंग्वेजेस वो थोड़ा डिफरेंट है कॉटलिन से. तो एनी बिगनर कैन स्टार्ट लर्निंग कॉटलिन और एनी नॉन टेक और टेक स्टूडेंट कैन स्टार्ट लर्निंग कॉटलिन फ्रॉम यूजिंग आवर अपकमिंग कोड लैब्स. सेकेंड यूनिट जो है वो है हाउ टू बिल्ड एंड्रॉइड ऐप यूजिंग यूआई, हाउ टू बिल्ड एन ऐप UI using Compose. And finally जो हमारा थर्ड यूनिट है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मॉडर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट. सो ये बेसिकली हमारा बिगनर ट्रैक है. सो या अब थोड़ा और हम डिटेल में जाते हैं लाइक यूनिट 1 में क्या है. तो यूनिट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन, set up Android Studio, how you can set up your Android Studio. Those who have not download the Android Studio, they can check out this code lab. Third one is build a basic layout. Yeah, how you can build a screen of app. So ये 3 simple basic learning pathway in unit 1. So I will also go through all these unit 1 by the end of this slide. So अभी बस ये हम slide overview कर रहे हैं कि क्या क्या हमें सीखना है in 1 month. By the end of the slide, I will also do the programming or complete the track side by side, so that you have an idea कि हाँ हमें कैसे करना है. Okay. Unit 2 है about learning Kotlin fundamentals. Fundamentals are very important. Okay. After that, you will learn how you can add button to an app, then interact with UI and state, how you can interact with UI, like for clicking. For example, if you build a button, मान लो कि तुम एक कैलकुलेटर बना रहे हो. For example, you want to add 5 plus 6 11. So when you click 5, then you click plus, then you click 6, then you click equals to, then it gives 11. So जो 11 वो दे रहा है उसके लिए interact with UI and state इस पार्ट में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि how it shows the answer. सेकेंड वन तो खाली ये बता रहा है कैसे तुम डिजाइन कर सकते हो. बाकी थर्ड वन में इट गोज इनटू दैट क्या क्लिक करने में क्या क्या शो होगा, क्या शो नहीं होगा. सो या एंड बाय completing every unit there is an basic app which you will build. So unit 1 के खत्म होने तक उन्होंने एक ऐप बनाना सिखाया which is a birthday card app. It's a simple screen app where a image is there. इमेज के ऊपर तुम्हारा नाम होगा, लाइक किसको विश करना है, हैप्पी बर्थडे ज्योति फ्रॉम समर. तो वो हम बनाना सीखेंगे यूनिट 1 में. सिमिलरली इन यूनिट 2 you will able to create a tip calculator app that calculate the tip from user input. Okay, ये दूसरा ऐप है. थर्ड वन जो तुम सीखोगे वो है थर्ड वन इज अबाउट डिजाइनिंग कि build beautiful app, make your app more beautiful and intuitive using material design. We will go through the designing part. और also हम Kotlin fundamental के बारे में सीखेंगे. Plus we also learn कि scrollable कैसे करें. For example, तुम वो देखते हो मतलब for example you are using any app, उसके ऐप हर ऐप के अंदर कुछ ना कुछ पेजेस होते हैं, तो तुम उसको कैसे स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर से नीचे कैसे कर सकते हो. तो you will able to design that and build a scrollable list. सो डोंट वरी अगर ये थोड़ा एडवांस जा रहा है, जब तुम ट्राई करोगे, जब तुम करना करोगे तो वो बेसिक से तुम्हें बताएगा A to Z. सो या एंड यूनिट 4 फिर फाइनली है कि एंड्रॉइड बेसिक. यूनिट 4 में यू विल लर्न अबाउट आर्किटेक्चर कंपोनेंट, नेविगेशन इन जेटपैक कंपोज, अडॉप्ट फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन साइजेस. लाइक एज यू कैन सी जो भी हमारे एंड्रॉइड फोन्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं. देन तुम अपना ऐप उस तरह से बनाओगे कि वो हर फोन में चले. ओके मतलब वो कंपेटेबल हो हर फोन में, हर फोन के साइज में.
सेकंड वन इज नेविगेशन फॉर, जैसे तुम अभी वेबसाइट में देखते हो वहाँ पे एक नेव बार आता है कि इसको क्लिक किया तो होम पेज पे चले जाता है, उसको क्लिक किया तो सोशल मीडिया पे चले जाता है, तो वी विल क्रिएट नेविगेशन और ऑल्सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बेसिक था यूनिट वन का ओवरव्यू। तो फिर फाइनली क्या, हाउ टू नेविगेट द कोर्सेज। सो जो प्रोग्रामिंग जिनको आता नहीं है, दे कैन ग्रो थ्रू ईच पाथवे, ईच यूनिट वन बाय वन। और जिसको थोड़ा बहुत भी पता है कॉटलिन के बारे में, देन दे कैन स्किप द कॉटलिन वाला जो कोड लैब है या यूनिट है, एंड दे कैन जम्प टू द नेक्स्ट यूनिट। सो ऑप्शनल है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आता है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट करके। ओके, सो ये था। तो फाइनली आई थिंक स्लाइड्स खत्म होने वाले हैं, उसके बाद वी विल हैव अ हैंड्स ऑन आवर यूनिट्स। ओके, नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी लैंग्वेज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम एंड्रॉइड ऐप बिल्ड करने के लिए, और पहले हम क्या यूज करते थे। तो अर्लियर टाइम पे जो एंड्रॉइड बनते थे, दैट टाइम वी आर यूजिंग जावा। ओके, देन गूगल वालों ने कॉटलिन को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि दे यूज कॉटलिन टू बिल्ड एंड्रॉइड एप्स, नेटिव एंड्रॉइड एप्स। ओके, एंड दो टाइप्स के होते हैं, एक तो तुम देखते हो कि हाइब्रिड होता है, एक एक नेटिव होता है एप्स। फॉर एग्जांपल एक जो तुम ऐप बनाते हो वो दोनों में चलता है, एप्स तो मतलब जो एंड्रॉयड में तो चलता ही है प्लस आईओएस में चलता है। ओके, वो होता है हाइब्रिड, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म पे वो चलेगा, क्योंकि एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है, उसमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मेरे में जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉयड है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि गूगल वालों का प्ले स्टोर है जहाँ पे जितने भी एंड्रॉयड ऐप रिलेटेड जो एप्स है वही लिस्टेड है, और आईओएस में जो एप्स है वो डिफरेंट है, मतलब वो आईओएस डिवाइसेस के लिए ही बने हैं। फॉर एग्जांपल, बट तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो हम एप्पल फोन में भी यूज कर सकते हैं और एंड्रॉयड में भी यूज कर सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप जो ऐप है वो हाइब्रिड है, मतलब वो दोनों प्लेटफॉर्म के लिए कंपेटेबल है। ओके, तो उसको फिर दूसरे लैंग्वेज में बनाया होगा। लाइक अगर बात करूँ हाइब्रिड लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, तो वी आर यूजिंग फ्लटर। फ्लटर में तुम एंड आईओएस एज वेल एज एंड्रॉयड दोनों का तुम एक साथ बना सकते हो ऐप। बट फॉर एंड्रॉयड इट इज फॉर द कॉटलिन इट इज अ नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो तुम खाली एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए ही बना सकते हो ऐप, आईओएस डिवाइसेस के लिए नहीं बना सकते। तो why you learn Kotlin programming language, there are three point. First one is it's an expressive and concise, बहुत छोटा होता है, and 3 to 4 lines के अंदर you can build interactive UIs और app. Second one is safe code, मतलब इसमें कुछ bugs या कुछ वो errors नहीं आते, मतलब बहुत ही safe होता है और secure होता है। और इंटरऑपरेबल, मतलब इट कैन रन ऑन एनी एंड्रॉइड डिवाइसेस, कंपेटेबल होता है वो। और यू कैन से कि मान लो कि तुम जावा यूज कर रहे हो एज वेल एज तुम कॉटलिन भी यूज कर रहे हो, तो तुम दोनों यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली टू बिल्डिंग दैट ऐप। सो ये था बेसिक डिटेल अबाउट हाउ यू कैन बिल्ड एन ऐप। सो ये बेसिकली ओवरव्यू था कि हम क्या करने वाले हैं, मतलब यूनिट्स के बारे में हमने ओवरव्यू कर दिया, और क्या क्या इससे हम क्या क्या हमें मिल सकता है, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की। तो अभी तक कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कि कुछ भी मतलब तुम्हें अभी तक कोई भी लगा डाउट। और बाय द एंड ऑफ दिस बिगनर फ्रेंडली सेशन यू विल build 3 app. First one is the happy birthday or the business card app, second one is art space app, third one is 30 days app. So we will go through these app in later session of our camp. Okay, so ये 3 apps हम बनाएंगे। बाकी if you want to build more app for your friends तो तुम बना सकते हो, मतलब by learning all these code labs, all these resources. So अभी तक कुछ भी डाउट है related to units or anything, तो you can ask in the comment section. Yeah. या सुशील ऐप एप्पल ऐप के लिए रूबी एंड स्विफ्ट, हाँ जनरली दे आर यूजिंग स्विफ्ट लैंग्वेज टू बिल्ड आईओएस ऐप। ओके, तो वो बेसिकली यूज करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। नाउ आई विल गो टू दैट पार्ट कि हाँ तुम कहाँ से वो सब सीख सकते हो। सो आई विल जस्ट गिव द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, तो तुम साइड बाय साइड उसको ओपन करके भी तुम चेक कर सकते हो। तो या जस्ट गिव मी अ मिनट। 30 days. Yeah, you can give a right click. Just wait. Let me close this, stop this presentation,
And let me share this link. Wait. Beginner, right? Or you can take a 1 minute break, like तुम मतलब कॉफी है या मतलब पानी वानी पीना तो पी सकते हो मतलब, because I think 8 बजने वाला है, so let's take a 1 minute break, then we can start from learning that units. Okay, so we will start at 7:53. Till then, if you have any doubt related to club app development, yeah, if you want to share your experience about anything related to development या और कुछ तुम्हें सीखना है in our DSC platform, you can share in this 1 minute. So yeah, let's have a break for 1 minute. We will start at 7:54. दिविज फॉर फायर बेस हम बेसिकली हम बैकएंड के लिए यूज करते हैं, बट जनरली इन द बिगनर वाला जो ट्रैक है, वी आर फोकसिंग ऑन यूआई पार्ट, मतलब फ्रंट एंड पार्ट कि फ्रंट एंड इंटरेक्टिविटी. वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेटाबेस पार्ट कि वी नीड टू हैव बिल्ड अ डेटाबेस और एनीथिंग. बट आई थिंक इन एडवांस सेक्शन देर इज अ फायर बेस वाला पार्ट. सो अगर तुम्हें सीखना है फायर बेस टू, देन यू कैन go to that advanced pathway. Okay, so yeah, you can use Kotlin plus Firebase to build Android app. So yeah, let me check. Perks of being a coder. So there are lots of perks. Like for example, तुम side में मान लो कि तुम you can start freelancing. For example, कोई foreign में बैठा है and they want a app. मेरे को एक to do app चाहिए for my personal organization. So you can pitch them कि हाँ, I'm an Android developer. I can build an app for your organization, and they give you thousands of dollars. मतलब दे सकता है इतना. So it's one of the point, one of the part कि हाँ कि as a coder या as a developer, you can start earning while studying right now. मतलब तुम पढ़ के भी side by side earn भी कर सकते हो. Also, there are lots of tech companies which are emerging or startups. They are also offer developers to join our company and start their career in any field, because technical field is a huge, मतलब बहुत सारे profiles हैं. There are data science, मतलब Android, web development, software engineers, testing, cloud computing. तो तुम्हें you have to find out क्या what is your interest and तुम्हें कौन से फील्ड में जाना है, क्योंकि हर फील्ड में स्कोप है. ऐसा नहीं है कि एक चीज पे स्कोप है, हर फील्ड में स्कोप है. यू हैव टू एक्सप्लोर क्या बट वाज योर मेन, क्या तुम्हारा स्किल सेट क्या है. अभी तक तुमने कोई भी स्किल सेट रेडी नहीं किया तो दैट्स नॉट एन इशू. यू हैव आल्सो 1 या 6 months टाइम, बिकॉज टू लर्न एनी स्किल्स यू हैव मतलब you just need 3 to 4 months to learn any skill. ठीक है. I think we are beyond our free time, मतलब 8 PM हो गया. So let's jump to the unit part, क्या how you can complete all this unit. हाँ, but before that I will give an announcement कि हाँ, एक तो हम हर Thursday at 7 PM we are live and share our event, मतलब our को मतलब जो हम सेशन कर रहे हैं वो तो हमारा हर Thursday होगा. Plus every day in evening around 7 to 7:30, अगर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू ऐप या कोई भी कोड लाइन में तुम फंस गए हो या कुछ बेसिक्स तुम्हें आ नहीं रहा है या तुम्हें और समझना है, तो वी विल ओपन अ विंडो ऑफ हाफ एन आवर, मतलब 30 minutes, वेयर वन ऑफ आवर कोर मेंबर विल बी देयर इन गूगल मीट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट so you can join that Google Meet and clear out. So this platform, every day it will available for half an hour, and link will be shared by the end of this session. So you just have to join it. अगर कुछ डाउट आता है तो, नहीं तो we will meet every Thursday at 7 PM. Okay. So ये था. And Twitter challenge तो याद ही है सबको. So yeah, चलो अब move करते हैं units पे क्या, how to complete all these units. So I hope you have go through the the link which I have shared in the comment section. So let me click that link. So I have already clicked that. Okay. So this is the learning platform where you have to complete all the units. So अभी तक 4 ही unit available है, and I think 4 unit for the basics है,
एंड तुम देख सकते हो कि एवरी यूनिट के अंदर देर आर 3 बैचेस, 3 3 3 3. तो total 12 batches are there in 4 unit. So you have to start from unit 1, your first Android app. Okay, so let me click explore part. ओके, सो अब यूनिट 1 के अंदर जैसे कि तुम्हें पता है 4 यूनिट है, एंड यूनिट 1 के अंदर 3 पाथवेज हैं. ओके, मैंने पाथवे बताया था क्या होता है पाथवेज. तो 3 पाथवेज हैं, और हर पाथवे में ना एक ट्रैक दिखाओगे कि तुमने कितना कंप्लीट किया है उस पाथवे को. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पाथवे नंबर 1. पहला पाथवे क्या था? इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन. तो इन दिस पाथवे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉटलिन लैंग्वेज. सो एक्सप्लोर इट. अभी मैं कुछ कोडिंग वोडिंग शायद ना नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया, 8 PM हो गया है. एंड तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट ऑल दिस यूनिट वन बाय वन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन यूज आवर व्हाट्सएप ग्रुप. एंड और इफ यू हैव एनी मोर डाउट कि हाँ अगर कोई ग्रुप में भी कोई समझा नहीं पा रहा है, तो यू कैन ज्वाइन आवर डेली Google Meet, which is open for 30 minutes only from 7 to 7:30. And yeah, okay, so ये था पाथवे नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स लाइक बिफोर यू बिगिन. तो यू हैव टू क्लिक टेक कोड लैब, एंड हर पाथवे के ऊपर एक बैच होगा, देखना ध्यान से. सो ये सब लर्निंग मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया है कि इसमें बताया रखा है कि हाँ तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या होता क्या है. तो ये सब तुम रीड आउट कर सकते हो. ओके, तो देन यू हैव टू कंप्लीट, क्लिक डन. सो जैसे डन करोगे तो यहाँ पे टिक आ जाता है. ओके, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज मतलब पाथवेज, so then you will able to see this badge on your Google developer profile. And make sure कि तुम ये जो लिंक ओपन किए हो, जो तुम्हारा जो मेन जो प्रोफाइल वाला जो लॉगिन आईडी है उसे से ही तुम्हें लॉगिन करना होगा. तो करेंटली आई एम लॉगिन फ्रॉम द मेन डेवलपर प्रोफाइल आईडी. तो या, तो एज आई हैव से कि हाँ हर पाथवे के अंदर थोड़े वीडियोस हैं, थोड़े लेक्चर्स हैं, थोड़े पीडीएफ्स हैं, शेयरिंग है. तो यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन दीज पाथवेज. So yep, let's start from our first pathway, मतलब third, your first programming in Kotlin. So let's take a code lab, और हर pathway divided है code lab से. Okay, so मैंने थोड़ा बहुत highlight किया था to share it with you in this session. So yeah, so basically to build an app you have to start with the programming language. So for this month, for building an app we are using Kotlin, which is official programming language by Google. Okay, तो Google ने प्रोवाइड किया, Kotlin प्लेटफॉर्म बनाया है, तो यू कैन यूज Kotlin लैंग्वेज टू बिल्ड एंड्रॉइड एप्स. सो ये डिस्कस है कि Kotlin होता क्या है. तो बेसिकली इट्स अ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हेल्प डेवलपर टू बी मोर प्रोएक्टिव, एंड यू कैन यूज Kotlin टू build an app while writing a few line of code. Okay, then you have to click next. फिर why you want to use Kotlin, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है. To practice the basic of Kotlin language, you will using an interactive code editor called Kotlin Playground. और एक चीज, to write a code you need a platform. एक तो हमारा है Android Studio where you will develop an app, और एक है for practicing your programming language you can use Kotlin Playground. Okay, I will share it in a later part of this video, later part of this session. And note that you don't build Android app using Kotlin Playground. In later pathway you will install using tool called Android Studio. Kotlin Playground is for brushing up your programming skill. Okay, and for building your app you need Android Studio. So I'm just going to complete only one pathway, तो मैं बस बता रहा हूँ किस हिसाब से मैं complete करना है. Okay, so basically this is Kotlin Playground. You just have to click it. Okay, yep. So basically कोई भी Kotlin जो लैंग्वेज है they will start with a function. जो हमने एक स्मॉल पे लिखा है स्मॉल, ये और ये सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं. फन, मेन, प्रिंट, एलन, क्या प्रिंट करना है हमें, हेलो वर्ल्ड. आई विल डिस्कस इट इन अ लेटर पार्ट. ठीक है, जस्ट हैव अ गो थ्रू कि क्या क्या है कोड लैब में. ओके, देन एंटर रन, एंड टू रन दिस प्रोग्राम यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस ग्रीन बटन. आई थिंक हम यहाँ पे रन कर सकते हैं. लेट मी चेक. नहीं, यहाँ पे नहीं, यू हैव टू गो टू द एंड्रॉइड Kotlin Playground part. Okay,
सो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है हाउ डज दिस वर्क, जो हमने लिखा है फन मेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, क्या वर्क करता है. अ कॉटलिन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ मेन फंक्शन. एवरी कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट विद अ फंक्शन जिसका नाम होता है मेन. ओके, which is a specific place in your code where the Kotlin compiler start. The main function is the entry point or the starting point of the program. So basically यहाँ यहीं से ही start होता है. ठीक है, so ये बता रखा है उन्होंने. एंड उसके बाद उन्होंने बता रखा है कि हाँ हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन. ओके, सो ये एक बार गो थ्रू कर लेना. ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो तुम पूछ सकते हो मेरे को. कल हाफ आवर का जो सेशन होगा, अगर किसी को डाउट है, या तुम्हें बस खाली फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस एंड इट विल ऑटोमेटिकली शो कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं. इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि हाँ व्हाई वी आर यूजिंग फन नेम इनपुट बॉडी, ये सब इन्होंने लिख रखा है. So you just have to read it and follow each and every instructions one by one. तो ये रहा. एक मैं बस साइड में प्रोग्राम करके बता देता हूँ, जैसे तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा. एक मिनट, पहले मैं बता देता हूँ कैसे हम ये कंप्लीट कर सकते हैं कोड लैब. तो ये स्टाइलिंग बता रखा है कि हाँ टू राइट अ फंक्शन क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए. वी नीड अ स्पेस आफ्टर मेन, ये सब स्टाइलिंग रिक्वायरमेंट होते हैं टू राइट एनी कोड. और ये सब एक्सरसाइजेज हैं. तो एक कोई सिंपल सा प्रोग्राम ले लेता हूँ और उसको मैं रन करके दिखाता हूँ साइड में. एक बार मैं म्यूट वो स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन एंड आई जस्ट गो टू द Kotlin playground part. Just a bit. Let me share a window. Android basics shared. Okay, yeah. So I hope my screen is visible. So let's type Kotlin playground. Kotlin playground. तो ये मैंने अर्लियर एक मैंने प्रोग्राम टाइप किया था. तो बेसिकली एक सिंपल प्रोग्राम में लिखा है, जस्ट आई हैव टू प्रिंट. इसको भी रिमूव कर देते हैं. जस्ट आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड पोस्ट कर देते हैं एंड रन इट. तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है फन कीवर्ड से, और ये सारे जो कीवर्ड्स हैं दे आर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स. ओके, एंड टू प्रिंट एनी आउटपुट यू जस्ट हैव टू यूज प्रिंट एलन कीवर्ड. ओके, और ये सब प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब तुम्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये आर ऑल प्री डिफाइंड. एंड अगर तुम्हें आउटपुट शो करना है, जस्ट टाइप कुछ भी तुम्हें शो करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड. अगर मेरे को और कुछ लिखना है हाउ आर यू एंड जस्ट क्लिक रन. ओके, हाउ आर यू यहाँ पे शो हो जाएगा, ये आउटपुट है. तो यू हैव टू ट्राई ईच एंड एवरी प्रोग्राम विच आर लिस्टेड इन आवर कोड लैब इन Kotlin playground. ओके, जस्ट सिंपली टाइप करना Kotlin playground and it will redirect to this page. So basically this is for brushing up your Kotlin programming language. So हम अपने कोड लैब पे चले जाते हैं. एक मिनट. यूनिट 1 explore. Your first programming, take a code lab. हाँ, तो ये सब तुम्हें एक्सरसाइज दे रखा है एंड यू हैव टू रन इट ऑन द प्लेग्राउंड. ये तुम्हें रन करके देखना है और क्लिक करना है कि क्या आउटपुट आ रहा है. ठीक है, दिस इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस. तुम ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो. तो बेसिकली this is how you can start writing your first Kotlin programming language. For example, you have to print the days of week. So you just have to. अभी मैं खाली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें ये खुद टाइप करना होगा. ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये खाली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ. ठीक है, सो ये बेसिक स्टार्टिंग है कि हाँ हाउ टू राइट अ प्रोग्राम. तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आफ्टर मेन यू हैव टू put two closing bracket, then you have to put a bracket after that. फिर यहाँ पे close करना होता है. You have to keep all these things in mind while writing a code. So yep. So ये पूरा था, solution हो गया. फिर next conclusion कि तुमने इस code lab से क्या सीखा. ओके, और next code lab में क्या बता रहे हैं.
So then हाँ, तो ये सारे एक एक कोड लैब से यू हैव टू कंप्लीट वन बाय वन. आफ्टर दैट देयर इज अ क्विज पार्ट, एंड जैसे तुम क्विज कंप्लीट कर देते हो, लेट मी शो द क्विज. जो भी तुमने किया होगा पहले से, उसी से ही क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, ये अराउंड 10 क्विजेज हैं. जैसे तुम सबमिट कर दोगे, देन इट विल गिव यू अ बैच. सो ये तुम्हें बैच तुम्हारे डेवलपर प्रोफाइल में शो हो जाएगा. ठीक है, तो आज मैं कुछ प्रोग्राम में कुछ नहीं बता रहा है कि कैसे तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है. यू फर्स्ट गो थ्रू दिस यूनिट वन बाय वन. फिर कुछ डाउट आता है, देन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट थर्सडे, और इन डेली जो हमारा डाउट वाला सेशन है उससे तुम पूछ सकते हो. और यू कैन यूज व्हाट्सअप. ठीक है, तो जनरली दिस इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन कि तुम्हें क्या करना है, क्या होता है, और क्या क्या तुम क्रिएट करोगे इन दिस मंथ. सो या दैट्स इट. आई थिंक 8:12 हो गया है. और लेट्स हैव अ क्यू एंड, अगर कुछ भी डाउट है you can use the chat section and ask your doubt using chat. Yep. And abhi 19 students are still joining, so yeah, you can share ki, yeah, you can ask any doubt agar kuch doubts hai tumhare paas. Or if you understand everything, then just give a reaction, या thumbs up, or use emoji, या just write done, या understand, so that मेरे को पता चले कि हाँ, whether you understand these things or not. Okay, Pooja, thumbs up, perfect. Yeah. Yes. Okay. So लैपटॉप से इमोजी कैसे भेजें? Okay, for this you have to install an web Chrome extension. इमोजी वाला एक एक्सटेंशन होता है, तो you can install that extension and you can use emojis. You can copy and paste it here. शाहिद, नो शाहिद, आप शाहिद हमजा अली, आपको कुछ मतलब क्या समझ नहीं आया? आप बता सकते हो, कुछ भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हो. Still we have 3 to 4 minutes left. अच्छा, shortcut for emoji, window plus. Okay, thinking about emoji. Okay, perfect. So basically आज कुछ वैसे important कुछ था नहीं, मतलब हमने खाली समझा है कि क्या है, कैसे कंप्लीट करना है. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें 2 स्टेप क्या है. पहला स्टेप है कि यू हैव टू क्रिएट एंड डेवलप अ प्रोफाइल, एंड सेकंड इज यू हैव टू स्टार्ट कंप्लीटिंग यूनिट 1. यूनिट 1 से तुम्हें स्टार्ट करना है, मतलब कंप्लीट करना 1 by 1 यूनिट, एंड ट्राई करना है कि नेक्स्ट थर्सडे से पहले ये यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाए. जैसे कि तुम देख सकते हो, आई एम स्टिल इन यूनिट पाथवे 3. वैसे मैंने कंप्लीट कर दिया था. आई हैव जस्ट डूइंग द क्विज पार्ट, एंड इट विल डायरेक्टली अपडेट टू 100%. जैसे तुम्हारा 100% हो जाता है, दिस शोज कि हाँ, यू हैव कंप्लीटेड दिस. और इन केस तुम्हें अगर उसकी नॉलेज है, मान लो कि मेरे को कॉटलिन आता है, तो मेरे को ये कोड लैब करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव टू अटेंड द क्विज पार्ट. आफ्टर क्लियरिंग द क्विज पार्ट, you will earn the batch. So batch is important here. So yeah, and by the third pathway you will able to build Android birthday card. Okay, तो एक बार मैं Android ऐप भी एक बार शो कर देता हूँ कि किस हिसाब से Android स्टूडियो दिखता है. तो let me share the Android studio जो I have installed last week. Yeah, so let me share it. Entire screen. या फॉर 1 यूनिट, जैसे कि मेरे को अराउंड एक दिन में भी तुम सीख सकते हो. मतलब इफ अगर तुम बैठते हो 3 से 4 घंटे एकदम मतलब फोकस होके, तो यू कैन इजीली कंप्लीट हाफ ऑफ दैट यूनिट 1. बट आई एम गिविंग यू 7 days. सो आराम से मतलब एक एक यूनिट पे जाओ, एक एक पाथवे कंप्लीट करो एक एक दिन में. रीड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन जो उसमें क्या क्या लिखा है, और यू कैन मेक नोट्स कि क्या क्या तुमने सीखा है उसके अंदर, और यू कैन शेयर इट ऑन ट्विटर एज वेल. तो ऐसा नहीं करना कि तुम्हें कंप्लीट करना है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा बस कंप्लीट करते जाओ. यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट, देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू द पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, pathway 4. So that's why I'm giving you 1 week. So next week we will start from unit 2.
तो बट उससे पहले हम यूनिट 1 का एक रिकैप कर लेंगे यूनिट 2 को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अभी का टास्क आपका ये होगा कि फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अ डेवलपर प्रोफाइल, सेकंड वन यू हैव टू स्टार्ट यूनिट 1 एंड प्रैक्टिस कॉटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम बेसिक्स। जो बेसिक वाले में बहुत इजी बता रखा है, कैसे तुम्हें लिखना है, कैसे तुम्हें सिंटेक्स राइट टाइप करना है। उसके बाद थर्ड चीज जो है वो है यू हैव टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। तो जो सेकंड जो पाथवे है वो है एंड्रॉइड स्टूडियो की, कैसे तुम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे। तो ये बता रखा है यहाँ पे, एक मिनट। फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप, या दिस वन इज हाउ टू सेट अप योर एंड्रॉइड स्टूडियो। तो इसमें ईच एंड एवरी स्टेप दे रखा है, लिंक्स आर प्रोवाइडेड है, तो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस। सो लेट मी शेयर माय एंड्रॉइड स्टूडियो। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है एक तरह का एंड्रॉइड की, किस हिसाब से दिखता है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेटेड है अभी, तो यू कैन यूज द लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो टू इंस्टॉल इट। ओके, राइट साइड पे अभी तुम्हें कुछ नहीं देखना, कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो तुम्हें और कुछ देखना ही नहीं है, मतलब यू हैव टू जस्ट क्लिक फाइल, न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तुम स्टार्ट कर दें तो इट विल रिडायरेक्ट टू द न्यू प्रोजेक्ट। ये सब कोड लैब में बता रखा है, तो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो मैं बस खाली एंड्रॉइड स्टूडियो का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे है। तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, दिस इज द प्रोजेक्ट पार्ट वेयर ऑल द फाइल्स एज वेल एज कोड जो तुम टाइप करोगे वो लिस्ट होता है वहाँ पे। बट मेनली हमारा जो फोकस होता है मेन एक्टिविटी डॉट के टी, के टी इज फॉर कॉटलिन फाइल एक्सटेंशन है, जैसे कि यू आर यूजिंग इमेज डॉट पी एन जी, पी एन जी फाइल है, इमेज डॉट जे पैक, तो ये सब फाइल टाइप्स है। सिमिलरली फॉर कॉटलिन दे आर यूजिंग डॉट के टी कॉटलिन, ओके फाइल। ये सब कुछ नहीं सही मतलब देखना है, जस्ट यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप विच आर देयर इन द कोड लैब, ओके। तो और इसके बाद तुम राइट साइड में देखोगे तो ये डिजाइन पैलेट है, कि मैंने बस सिंपल ही लिखा था हैप्पी बर्थडे सैम फ्रॉम ईमा। ये खाली एक डिजाइन ओवरव्यू दे रहा है कि किस हिसाब से वो स्क्रीन में दिखेगा। एंड फॉर रनिंग इट ऑन योर फोन यू हैव टू इंस्टॉल, देयर आर टू वेज टू रन योर ऐप। एक तो है तुम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो कि तुमने जो डेवलप किया है तुम्हें चेक करना है कि हाँ वो सही है कि नहीं, और यू कैन यूज वर्चुअल इम्यूलेटर। इम्यूलेटर क्या, एक वर्चुअली एक फोन होगा जो तुम्हारे एंड्रॉइड ऐप में लिस्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार वो भी शेयर कर देता हूँ। और एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, मतलब यू नीड अराउंड मतलब मिनिमम 4 GB रैम। आई होप सबके पास 4 GB होगा, अगर नहीं भी हो तो यू कैन इंस्टॉल इट, बट थोड़ा स्लो चलेगा, सो तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड या और बाकी थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए हार्ड डिस्क में। सो बेसिकली दिस इज अ इम्यूलेटर, एक वर्चुअल फोन। तो इससे क्या होगा कि मेरे को अपना जो फोन को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे अपडेट होगा इट विल रिडायरेक्ट टू दिस वर्चुअल डिवाइस, ओके। तो बट इट टेक सम टाइम टू रिलोड, तो थोड़ा टाइम लगाता है मतलब इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो जो मैंने अभी टाइप किया हैप्पी बर्थडे सैम फ्रॉम ईमा, इट विल रिडायरेक्ट टू दिस फोन। सो या जस्ट वेट। अभी तक फिर भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो। तो ये तुम देख सकते हो, ये एक सिंपल सा एक स्क्रीन में मैंने खाली टाइप किया है हैप्पी बर्थडे सैम फ्रॉम ईमा, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो डिजाइन जो वो है एक तरह का प्रीव्यू दे रखा है कि कैसा तुम्हारे ऐप में शो होगा। तो जो ये जो मैंने प्रीव्यू दिया है ये एक तरह का कंपोज ही है जो हम यूज करेंगे इन अपकमिंग वीक। जो जो हमारा मेन एंड्रॉइड ऐप का जो फोकस है कि हाउ टू यूज कंपोज, ठीक है। और कोडिंग के लिए तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेंज हैप्पी बर्थडे राम, ये ऑटोमेटिकली इस पे रिडायरेक्ट कर जाता है। एक मिनट, RAM, ओके। तो प्लस पॉइंट एक और है कि जो भी तुम टाइप करते हो वो साइमल्टेनियस it will updated on phone. This is the plus point of using compose, okay। नहीं तो फिर तुम्हें पहले रन करना पड़ेगा, फिर तुम्हें ओपन करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तो it takes lots of time. So here by writing a single line, so it will redirected and directly वो शो कर देगा कि तुमने क्या टाइप किया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यूजिंग कंपोज। बाय द वे ये एक मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा था कि क्या है एंड्रॉइड स्टूडियो, बाकी यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द पाथवे।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू हैव टू बी, यू हैव सम, मतलब तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा टू लर्न एंड्रॉइड स्टूडियो. ओके, so I guess that's it from today's session. And okay, nice, Shahid. Finally, you add some emojis. Okay, so I guess uh, हम टाइम के ऊपर भी चले गए, मतलब 8:22 हो गया है. सो अभी भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, या वी कैन leave this session and we can came back come back next Thursday at 7 p.m. Okay, and yeah, thank you so much guys for attending this session. And जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उनके लिए बैड लक है, क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा. So shall we download? No doubt from my side. Shall we download? Yes, Sushil, you can start downloading and check करो कि हाँ क्या है, कैसे तुम्हें रन करना है. तो एक तुम्हें आइडिया हो जाएगी कि हाउ टू रन एन एंड्रॉइड ऐप. सो या जो जो मैंने बताया है कि क्या क्या तुम्हें कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम ABC, देन यू कैन बिल्ड एंड्रॉइड ऐप. सो या दैट्स इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे. So and finally, thank you for the session. Yep, and thank you for today's session. Thank you for the session. Yep, yeah, you're welcome. Thank you guys for joining the session. Okay, and in case finally by the end of this Android camp, we will also have a offline meetup. But I am not there because I am in Karnataka right now. So all the core members, our GDSC lead, so we all can meet and share your experience. कैसा था, and जो भी winner होगा they will get some perks. So बहुत सारी चीजें, तो we will have a chance to meet with each others. Okay, so yeah, that's it, and मिलते हैं next Thursday at 7 p.m.